Hello students, Jai Hind, Vande Mataram. Once again welcome back to your class Ravisirjee Maths, the easiest and finest way to learn the concepts of mathematics from standard 9th to 12th. Students, in our today video lesson we are going to study about types of relation: void relations, universal relations, identity relations, symmetric relation, antisymmetric relation, transitive relation, equivalence relation, partial order relation, and total order relations. Students, if you are new to this channel, just subscribe and don't forget to hit the bell icon. Okay students, now the first one is void relation, means empty relation. A relation R in a set A is called void relation. अगर कोई रिलेशन है वो सेट A से डिराइव्ड है उसको हम void relation बोलेंगे या फिर empty relation बोलेंगे. If no element of set A is related to any element of A, अगर A का कोई भी एलिमेंट A से मैच नहीं करता है, कोई रिलेट नहीं करता है, in that case relation is known as empty relations. Means empty relation is subset of A cross A. Let us see an example over here. Let A is set of all students in a girls school. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है कि एक स्कूल में सारी गर्ल्स हैं. वी डिफाइन रिलेशन R ऑन सेट A, तो हम रिलेशन डिफाइन करेंगे R सेट A पर. ओके स्टूडेंट्स, सो R is a relation in pair A and B. A and B both are brothers. अगर हम आपको रिलेशन कोई दें ऐसा कि ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, अगर दोनों ब्रदर्स हों तो हमारा जो रिलेशन होगा वो एंड रिलेशन जो होगा वो क्या होगा. स्टूडेंट्स, हमको पता है कि द गिवन स्कूल जो है वो गर्ल्स स्कूल है. व्हाट इज़ गर्ल्स स्कूल है. सो ऐसा कोई रिलेशन होगा कि दो बॉयज़ ब्रदर्स हों. सो हियर स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट इट इज़ अ गर्ल्स स्कूल, सो देयर इज़ नो बॉयज़ इन द स्कूल. सो बॉयज़ होने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, हैंस दे कांट बी ब्रदर. तो जो आपने ऑर्डर पेयर, कोई भी दो ऑर्डर पेयर लिए, कोई भी आपने दो स्टूडेंट्स लिए हैं, वो ब्रदर नहीं हो सकते. सो आर हैज़ नो एलिमेंट, सो आर इज़ नोन एज एम्प्टी रिलेशन, या फिर आप उसको वॉइड रिलेशन भी बोल सकते हो. लेट अस सी द नेक्स्ट वन इज़ इफ़ सेट ए, अगर कोई सेट है वो हैविंग एलिमेंट 1 2 3, then one of the void relations can be x minus y is equal to 5. Here students you can see that R the relation in form of xy, modulus of x minus y is 8. So students आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट अगर लेते हो A क्रॉस A में 1 2 3, आप 1 में से 1 करोगे तो 8 नहीं आएगा, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 8 नहीं आएगा, 3 में से 3 भी माइनस करते हो तो 8 नहीं. आप कोई भी अगर A क्रॉस A मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी एक इंटीजर लोगे उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 8 पॉसिबल नहीं होगा. देयरफॉर दिस रिलेशन इज नोन एज एम्प्टी रिलेशन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू द यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन इज अ रिलेशन ऑन अ सेट when A Cartesian product A is subset of A cross A. In another word, you can say that universal relation is a relation if each element of set is related to every element of A. For example, relation on set A है having element 1 2 3 4 5 6. अब उस पर आप रिलेशन फाइंड करना है आपको. A, B belongs to R. जो इक्वेशन है a माइनस बी, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रिलेशन फाइंड आउट होगा वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा. बिकॉज आप कोई भी एक एलिमेंट 1 लो, अगर आप 2 में माइनस करोगे तो 1 माइनस 2 क्या होगा, ऑब्वियसली 1. मॉड्यूलस करोगे तो वो सारी की सारी जो वैल्यूज़ होगी वो 0 से ग्रेटर होगी, बिकॉज यहाँ पे मॉड्यूलस साइन है. सो स्टूडेंट्स, आप कोई भी यहाँ पे कोई भी 2 इंटीजर लो और एक दूसरे को उसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो ऑब्वियसली वो जो इंटीजर आएगा वो 0 आएगा या फिर 0 से ज़्यादा. अगर आप
1 करोगे तो 0 ही आएगा, अगर 1 - 2 करोगे तो -1 आएगा बट पॉजिटिव आएगा. So let us see another example. A relation R is set is called universal relation if each element of A is related to every element of A. जैसे हमने अभी स्टडी किया. सपोज एन एग्जाम्पल, गर्ल्स स्कूल में डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ A एंड B इज़ लेस देन 100. अगर गर्ल्स स्कूल है और उसमें से कोई भी 2 गर्ल्स का आप डिफरेंस एज मेजर करो तो वो 100 से लेस ही होगा. बिकॉज गर्ल्स है तो ऑब्वियसली देयर एज विल बी लेस देन 18 से कम ही होगा. कोई भी 2 गर्ल्स का एज माइनस करोगे तो उनकी एजेस जो होगी वो 100 से लेस होगी. ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट concept about relation, identity relation. In a identity relation every element of set A is related to itself only. Okay students, जो एक every element of set जो होता है वो खुद से ही related होता है. Example, consider a set A having element A, B, C. The identity relation will be, तो identity relation करना है आपको तो एक जैसा ही एलिमेंट होना चाहिए. सो ए और ए का पेयर बनेगा, बी और बी का पेयर बनेगा, सो या फिर सी और सी का पेयर बनेगा. तो इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकते हैं. अनदर एग्जांपल आप लिख सकते हो, सपोज एलिमेंट अ सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 3 है, दिस सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. अगर हम इसको आइडेंटिटी एलिमेंट में डिफाइन करना चाहते हैं तो वी कैन राइट द ऑर्डर पेयर इन द फॉर्म ऑफ 1 1 2 2 3 3. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी जो रिलेशन है उसके एलिमेंट एक जैसे ही होते हैं. दिस पॉइंट यू विल हैव टू कीप इट इन माइंड. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. इन अ रिलेशन एंड फंक्शन, a reflexive relation is one of which every element of map to itself. रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होता है वो खुद को मैप करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कंसीडर करो कि यू हैविंग एन अ सेट ए, आपके पास एक सेट है हैविंग एलिमेंट 1 and 2 जिसके एलिमेंट 1 और 2 है. सो हाउ वी कैन डिफाइन रिफ्लेक्सिव रिलेशन? सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन 1 1 रिलेटेड विथ 1 1, 2 and 2, 1 and 2, 2 and 1. So students, hence these are reflexive relation where A comma A belongs to R for all A belongs to A, where is the element A is the set and R is the relation. A क्या है? सेट है और R क्या है? रिलेशन है. So students, in short we can say that reflexive relation is one which every element map to itself. जो एवरी एलिमेंट होगा सेट ए का वो खुद को मैप करेगा ही करेगा, मीन्स उसकी खुद की इमेज बनेगी ही बनेगी. राइट? ओके, लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. हियर स्टूडेंट्स, द गिवन टेबल, द सिंबल लाइक इक्वल टू, सेट इंक्लूजन, डिविजिबिलिटी, ग्रेटर देन और इक्वल टू, less than or equal to. Students, all these are the examples of reflexive relation. Okay students, let us see the practical examples of reflexive relation. Here is been the relation R1 having the order pair 1 1 1 2 2 1 2 2 like that way, R2 and R3 and continue at R6. So how we can determine the above the given relations are reflexive relation. Here being students, you can see that in R3 1 1 1 2 1 4 2 1 2 2 3 3 4 1 4 4 are reflexive because both contains all pairs of form of AA, means 1 1 2 2 3 3 4. The other relation are not reflexive because they do not contain all these ordered pair. In particularly R1 and R3, R2, R4 and R6 are not reflexive because 3 3 is not in any these relations. So students, here you can see that R3 and R5 are reflexive relation. Now the next is symmetric relation. Let A be a set in which the relation are defined. हम कोई भी एक सेट लेते हैं जिसमें आपको रिलेशन डिफाइन कर सकते हो. देन R is said to be symmetric relation. हम R को सिमेट्रिक रिलेशन कब बोलेंगे? इफ़ A, B जो आपका ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में बिलोंग करता हो एंड ऑर्डर पेयर
B comma A belongs to relation. That is means A relation over A relation with B and B relation with A for all A comma B belongs to R. So consider an example over here, students. For example, the set A of natural number, if relation A be defined by x plus y is equal to 5, then this relation is symmetric in a way that A plus B is equal to 5 or B plus A is equal to 5. So obviously students, आप A और B ऐड करो तो भी 5 आएगा और B plus A करोगे तो भी 5 आएगा. So students, here you can say that this is a symmetric relation. Okay, now moving to the next example of symmetric relation. A relation R is defined on the Z पे defined है, and A relation with B if A minus B is divisible by 5, अगर A minus B 5 से divisible है, so R is symmetric matrix होगा कि नहीं होगा. So students, here you can see that A comma B belongs to Z में है, A और R रिलेटिव है, रिलेशन में है, then A minus B divided by 5 and therefore B minus A also divided by 5. So this is symmetric matrix. Okay, now students, see the next definition of relation, antisymmetric relation. So in set theory we know that the relation R is said to be antisymmetric on a set A if R is related with X and Y is related with X holds when X and Y is equal to R. It can be defined as relation R antisymmetric if either X comma Y does not belongs to R or Y comma X does not belongs to R where X does not is equal to Y. A relation R is not antisymmetric if there exists X comma Y belongs to A such that X comma Y belongs to R and Y comma A belongs to R but X does not is equal to Y. If a relation is not symmetric, that does not means it is antisymmetric. Antisymmetric relation having example. Suppose you having a question, which of these are antisymmetric? So students, here is when the relations are given, you will have to say that which relations are antisymmetric. So first one is not antisymmetric here because students, here you can see that 1 comma 2 belongs to R and 2 comma 1 belongs to R but 1 does not is equal to 2. Second, R is not antisymmetric here because 1 comma 3 belongs to R and 3 comma 1 belongs to R where 1 does not is equal to 3. R is not antisymmetric here because 1 comma 2 belongs to R and 2 comma 1 belongs to R but 1 does not is equal to 2. And also 1 comma 4 belongs to R and 4 comma 1 belongs to R, therefore 1 does not is equal to 4. So these are the example of antisymmetric relation. Now the next is transitive relation on a set. Let A be a set in which the relation R is defined. आपको कोई भी एक सेट लेना है जिस पे रिलेशन डिफाइंड होता है. R is said to be transitive. R को transitive तब बोलोगे if A comma B belongs to R and B comma A belongs to R implies this A comma C, the order pair A comma C belongs to R, then you can see that R having transitive relation. Okay students, now moving to the next example of transitive relation. Having set A having element 1 2 3, relation defined on A is less than relation defined है because 1 2 से लेस है, 2 3 से लेस है एंड 1 3 से लेस है. तो हमको वेरीफाई करना है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं. सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी दैट A रिलेशन B रिलेशन C एंड C रिलेशन A, so it is transitive relation. Equivalence relation. A relation R on set A is said to be equivalence relation if and only if the relation R is reflective, symmetric and transitive. कोई एक रिलेशन को equivalence relation तभी बोलोगे if that relation having रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों रिलेशन अगर इंक्लूड हो किसी रिलेशन के अंदर, दैट रिलेशन इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन. रिफ्लेक्सिव का आपको पता ही है डेफिनेशंस, द रिलेशंस हैविंग इक्वल एलिमेंट, एंड सिमेट्रिक का भी पता है और ट्रांजिटिव का भी पता है. आप तीनों को, इन तीनों को अगर वेरीफाई कर देते हो, सो द गिवन रिलेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंट रिलेशन.
Now the next definition of partial order relation. A relation R on set S is called partial ordering or partial order relation if it is reflexive, antisymmetric और transitive. कोई रिलेशन को हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तब बोलेंगे अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटीसिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव. स्टूडेंट्स हमने ये तीनों का डेफिनेशन स्टडी कर लिया है. सो इफ़ यू वांट टू वेरीफाई that a given relation is partial, so you will have to prove that that relation is reflexive, antisymmetric and transitive. Here is the examples are given. Now the next is partial total order relation. What is total order relation? A binary relation R on A set A, a total order if and only if. कोई भी एक रिलेशन को आप टोटल ऑर्डर रिलेशन तभी बोलोगे अगर वो पार्शियल ऑर्डर हो, राइट. एंड फॉर एनी पेयर ऑफ एलिमेंट A and B of A लेस देन B and B is greater than relation or less than B, or A is greater than relation. That is very element related to with every element on a way that other. स्टूडेंट्स टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन को हम लीनियर रिलेशन भी बोलते हैं. एग्जाम्पल द लेस देन और इक्वल टू रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर I is total order relation. Okay students, here we are completing today video lessons. Hope you have understood. In coming video lesson we will going to learn about functions. So keep watching your channel Ravisirjee. Thank you so much.